स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नैनो मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। जो टर्म था नैनो, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज नैनोस, विच मीन्स ड्वार्फ और स्मॉल. It is 1 billionth of a meter. So a nanotechnology is defined as the science and technology of small things. And it is one of the most rapidly advancing scientific technologies of today's. So 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. So any material that is manipulated at the scale of nanometer is nanomaterial. So in nanotechnology, a nanoparticle is defined as a small object that behave as a whole unit and a size between 1 nanometer to 100 nanometer. And these particles or the material, they can be metals, ceramic, minerals, polymeric materials, composites, carbon allotropes, etc. So there are some surprising changes that may occur in nanomaterials. Just opaque substance can become transparent in case of copper. Platinum is an inert material, but if it is in nano size, it becomes as a catalyst. Aluminium, normally aluminium metal is a very stable metal, but in the nano size, it becomes a combustible. The gold, normally gold is solid at a room temperature, but at nanoparticle it becomes liquid. And the gold color is also changed. Normally gold is yellow in color, but in nano size or nanoparticle the gold color change into pink, blue, etc. on the basis of their size of the particles. The insulators become conductors and conductor becomes insulators. So why the properties of nanomaterials differ significantly from the other materials? मतलब जो गोल्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड था, वो हमारा नैनो पार्टिकल्स में लिक्विड हो गया. या एल्यूमिनियम हमारा कितना स्टेबल था, बट सेम नैनो पार्टिकल में वो कंबस्टेबल हो गया. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो मटेरियल्स हैव, जो कि बल्क मटेरियल से वो डिफरेंटली बिहेव करता है. तो मेनली दो इसके पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज द नैनो पार्टिकल्स हैव वेरी लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देन बल्क मटेरियल. सो वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो इंक्रीज होने से वो इंक्रीज होता है वाइल रिड्यूसिंग द साइज. नॉर्मली एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, आपका अगर मान लीजिए वुड ब्लॉक है, ओके, वुड ब्लॉक ईजिली बर्न नहीं हो पाएगा, बट उस वुड ब्लॉक को हम एकदम छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें तो वो ईजिली इट कैचेस द फायर. सो जैसे हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी जो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. सो द फर्स्ट रीजन इज दैट नैनो पार्टिकल्स हैव वेरी लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देन बल्क मटेरियल. Thus it makes nanoparticle more chemically reactive and affect their strength and the properties. And the second one is the quantum effect begins to dominate on the behavior of the matter at nanoscale, affecting the optical, electrical, mechanical and magnetic properties. So because of these 2 points, nanomaterials behave differently as compared to bulk material. Now the classification of nanomaterial on the basis of rectangular nanostructure, that is quantum well, quantum wire, quantum dot. So उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. In quantum well, if one dimension of the material is reduced to nano range while the other 2 dimension remains large, so that is the quantum well. आप 1 डायमेंशन को सिर्फ रिड्यूस करेंगे. ये हो गया हमारा बल्क मटेरियल. सो बल्क मटेरियल से हमने नैनो मटेरियल बनाया बाय द रिड्यूसिंग ओनली द 1 डायमेंशन. एंड द नेक्स्ट वन इज द क्वांटम वायर. If the 2 dimension of the materials are reduced to nano range while the third remain large, that is called as quantum wire. यहाँ पे हम 2 डायमेंशन को रिड्यूस करेंगे और थर्ड सेम रहेगा, then that is called quantum wire. And the third one is quantum dot. If all the 3 dimensions are reduced to nano range, then we get the quantum dot.
So these are the classification of the nanoparticles on the basis of rectangular nanoparticles. Now the properties of nanoparticles. By changing the particle size of material, the properties like melting point, solubility, color, transparency, catalytic properties are changed. And with different surface properties of nanoparticles, the properties dispersibility, conductivity, catalytic behavior, they also changed. And one of the property, due to the large surface volume ratio in nanoparticles, the number of reactive site increases, which enhance their catalytic activity. Now the approaches for the preparation of nanoparticles. There are two approaches. One is top-down approach and second one is bottom-up approach. So the top-down approach, in this approach we begin with a pattern generated on a large scale and then reduced to nanoscale. It involves the production of very small structures from large piece of material. मतलब बड़े से आपको बड़े स्ट्रक्चर से स्मॉल नैनो स्ट्रक्चर फॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. एंड द बॉटम अप अप्रोच, in this approach we begin with the small units and single atom and molecules assembles into the nanostructures. बॉटम अप अप्रोच में स्मॉल सब्सटेंस, स्मॉल यूनिट से हम नैनो पार्टिकल फॉर्म करते हैं. सो दीज आर द अप्रोचेस. इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए ये बल्क है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, बल्क को हम पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा स्मॉल हुआ एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नैनो पार्टिकल्स. तो ये जो अप्रोच हुआ दैट इज़ अ टॉप डाउन मेथड्स. तो ये अप्रोच है और इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे मैकेनिकल ग्राइंडिंग हो गए, इरोजन्स हो गए, ये सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए. नाउ इन द बॉटम अप अप्रोच हमने लिया एटम्स, स्मॉल सब्सटेंस लिया, फिर एटम से क्लस्टर्स फॉर्म्ड हुआ एंड देन वी गेट अ नैनो पार्टिकल. दैट इज़ अ बॉटम अप मेथड और अप्रोच. इसमें जो अलग मेथड्स होंगे प्रिपरेशन के, एरोसोल टेक्निक, केमिकल प्रेसिपिटेशन, सेल्फ असेंबली एट्सेट्रा. Now the examples of nanomaterials. There are some examples just like carbon nanotubes. The sheets of graphene are rolled up to the make a tube of 0.4 nanometer in diameter. Fullerenes, so both are the examples of carbons. One is carbon nanotube, other one is fullerene, that is also known as buckyballs. Now the applications of nanomaterials. So the application of nanomaterial is very vast. It is used in the every field of our life cycle, just like bioengineering, defense and security, optical engineering, medicine, drugs, energy, fabrics, nano devices, etc. and etc. So some applications. So nano-sized titanium dioxide and zinc oxides are used in a sunscreen as they absorb UV rays. Silver nanoparticles are used as a antibacterial agents. Nanotechnology products more efficient, lightweight and high energy density batteries. It produces more efficient, lightweight and high energy density batteries. Nanoparticles are used in drug delivery systems. Nano coating improves the properties like wear resistance and scratch resistance and hydrophobic properties of the materials. It is also used for a large amount of data storage devices. So, and the last one, nanostructured membranes used for water purification techniques. Thank you for watching this video.